मेरे तो, जो कुछ भी जित्तिया जिंदगी च सब कुछ हारदा मेरे तो। रोवे दिल दा टुकड़ा आखिर नू है कातो तोड़ना पैंदा है। मैं लकी तियां बाबल दी मैनू बापू पुत पुत कहंदा है। मैं लकी तियां बाबल दी मैनू बापू पुत पुत कहंदा है। सिर दी पग वियां हाय पग वियां ते ताज वियां। मैनू गलती हुई तो छिड़के ना बस अखां नाल ही कहंदा है। मैं लकी तियां बाबल दी मैनू बापू पुत पुत कहंदा है। मैं लकी तियां बाबल दी मैनू बापू पुत पुत कहंदा है। वेड़े विच खिड़ खिड़ हसदी नू वेखदा। निक्के निक्के पब जदों चकदी नू वेखदा। निक्के निक्के पब जदों चकदी नू वेखदा। अणमुल्ली दात सानू भी देण वास्ते शुकराना रब्बा तेरा धी देण वास्ते। शुकराना रब्बा सानू धी देण वास्ते। अजे छोटियां ते गल मेरे वस दी नहीं। मैं किन्ना कुछ सोचदी जो दसदी नहीं। अजे छोटियां ते गल मेरे वस दी नहीं। मैं किन्ना कुछ सोचदी जो दसदी नहीं। तेरे गोटी उत्ते बन्ना जदों रखड़ी निग आउंदा ए बापू दी जीवे लोई। मेरे वीरिया हो मेरे वीरिया मेरे वीरिया मैं तेरे तो जहान वार दूं जदों मैं कमाउण जोगी होई। मेरे वीरिया मैं तेरे तो जहान वार दूं जदों मैं कमाउण जोगी होई। अमड़ी दा कत्या सांभी सूत मेरी ये दानी धीए। अमड़ी दा कत्या सांभी सूत मेरी ये दानी धीए। बाबुल दा वेड़ा छड़ के जावे जेड़े देसां नू। बाबुल दा वेड़ा छड़ के जावे जेड़े देसां नू। सुखां दियां पौड़ा हरदम छूहण तेरे केसां नू। शाला तेरा उचड़ा होए रसूख मेरी ये दानी धीए। अमड़ी दा कत्या सांभी सूत मेरी ये दानी धीए। अमड़ी दा कत्या सांभी सूत मेरी ये दानी धीए। हरमन अते शिल्पा के वो आन के अगला जिहड़ा वा प्रोग्राम ओदा मंच संचालन करनगियां। Gathered here to celebrate a remarkable milestone in the life of a devoted soul, Sister Priya Teres. With boundless love and unwavering faith, Sister Priya has dedicated 25 years to the service of God and humanity. As a member of a Bethany congregation, today we celebrate her silver jubilee, honoring her journey of love, compassion and selfless service. A very warm welcome to each of you who have come to be a part of this joyous occasion. On behalf of the family members, I, Harman, and I, Shilpa, are honored to be your host today.
leading you through this memorable celebration. Let us embrace this opportunity to rejoice in Sister Priya's remarkable contribution and the vibrant spirit of community that surround us. So now I welcome Matthew Fufuji on behalf of the family to say a few words of welcome. महफिल में रौनक आती है आप सबके आने से। सब तो पहलों मैं स्वागत करता हाँ मानयोग सिस्टर प्रिया ट्रेस जी का, जिन्हां दी सिल्वर जुबली मनाउण दे लई ਅਤੇ प्रभु का धन्नवाद करन दे लई असीं सारे इत्थे इकट्ठे होए हाँ। और असीं जोरदार तालियां दे नाल सिस्टर जी का स्वागत करिए। मैं अपनी जलंधर डायसिस के रसूली प्रबंधक अति सत्कारयोग बिशप अग्नैलो जी का इस जुबली समारोह विच शिरकत करन दे लई विशेष तौर पे सिस्टर प्रिया वालों, अपने परिवार वालों, अपनी पैरिश प्रीस्ट वालों अते इत्थे इकट्ठे हुए सारे भैन भरावां वालों बिशप जी का जोरदार तालियां नाल हार्दिक स्वागत करता हाँ। मैं विशेष तौर पे स्वागत करता हाँ बैतनी जमात की प्रोविंशियल काउंसलर मानयोग सिस्टर रोज मार्गरेट जी का, जो अपना कीमती समा कढ़ के साडे विचकार मौजूद हैं। और असी जोरदार तालियां दे नाल उन्हां दा भी स्वागत करिए। मानयोग फादर थॉमस कीपरत जी, जो कि सिस्टर प्रिया ट्रेस जी दे वोकेशन प्रमोटर हैं, वो भी अपना प्यार विखाउण लई साडे विचकार पहुंचे हैं। असीं उन्हां दा भी इत्थे आउण ते तालियां दे नाल जोरदार स्वागत करिए। सिस्टर प्रिया ट्रेस जी नूं अपना प्यार देण लई आए हुए सारे फादर साहिबाना दा, सिस्टर साहिबाना दा अते मुनाद भरावां दा भी असीं जोरदार तालियां दे नाल स्वागत करिए। असीं खास तौर ते जी आया आखते हाँ साडे खास मेहमानां दा, रिश्तेदारां दा, सिस्टर जी दे चुने हुए मेहमानां दा, सज्जनां दा अते मित्रां दा, साडी पैरिश दे अते डेरा बाबा नानक पैरिश दे भैन भरावां दा, पिंड दे अते दूर नेड़ेों आए हुए सारे मुहब्बत भरां दा असीं दिल दियां गहराइयां तो स्वागत करते हाँ। आखिर विच एक बार फिर तो तुहाडा सारिआं दा इस समागम विच आउण लई जी आयां आखदे हाँ। धन्नवाद। Before welcoming the guests on this occasion, To commence our cultural segment, we have a graceful welcome dance performed by the talented students of Sacred Heart Convent School to welcome you all. so let's begin this performance.
जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी जी आया नो 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 गल बाग ने साथे अज दर्शन होवे तुहाडे गल बाग ने साथे अज दर्शन होवे तुहाडे रस कहंदे आओ जी जी आया नो 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 बड़े प्यारे लगते हो चमकारे लगते हो बड़े प्यारे लगते हो चमकारे लगते हो हाय ओए रब सबको तुझनारे लगते हो आओ जी दिया पाके जी तेरे गल्लां देखी रस कहंदे हो आओ जी जी आया नो 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 Let us hear our esteemed guests on stage. We invite Bishop Agnello, Sister Rose Margaret, the Provincial Councillor, Father Thomas Keeper, Sister Priya's Vocation Promoter on the stage, and I request Sir Tarseem to take over. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਿਸ਼ਪ ਅਗਨੈਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਫਾਦਰ ਥੋਮਸ ਕੀਪਰ। ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਫਾਦਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਵਿਲਸਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਹਟ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਾਦਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਾਲ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਥਿਊ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਥਿਊ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਥਿਊ ਅਤੇ ਕਿਰਨ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਿਸ਼ਪ ਅਗਨੈਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਥਿਊ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਜੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਜੂ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿਸਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਥਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਿਸਟਰ ਰੋਸ ਮਾਰਗਰੇਟ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਥਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਿਸਟਰ ਰੋਸ ਮਾਰਗਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਥਿਊ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਥਿਊ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਜੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਫਾਦਰ ਡੈਨੀਅਲ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਵੀਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨੋਟਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਡੈਨੀਅਲ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਬਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਫਾਦਰ ਥੋਮਸ ਕੀਪਰਤ ਜੀ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਥੀਡਰਲ ਚਰਚ ਦੇ ਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਜੀ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਾਦਰ ਮੈਥਿਊ ਕੀਪਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਾਦਰ ਡੈਨੀਅਲ ਗੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਜੀ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਓ ਯੋਧਾ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਵੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਫਾਦਰ ਥੋਮਸ ਕੀਪਰਤ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ। Next occasion, Sister Priya will now proceed with the ceremonial cutting of the Jubilee cake, a symbol of her 25 years of devoted service and faith. We request dear Bishop, Sister Rose Margaret, Father Thomas Keeprat, along with Daduji to join Sister Priya in cake cutting ceremony. Meanwhile, we invite sisters from the Mdas community, Miss Kajal and the choir group to grace us with a heartfelt song of joy and blessing, enriching this celebration with expressions of gratitude and reverence. I request Sister Chantal and Sister Pressy to join us on. तुमको मिले हर खुशी, गम ना सताए कभी, प्रभु प्रेम सदा तुम्हें मिलता रहे। तुमको मिले हर खुशी, गम ना सताए कभी, प्रभु प्रेम सदा तुम्हें मिलता रहे। देते आज महफिल सजाई, सबने दुआ सिस्टर प्रिया, सिल्वर जुबली की तुमको बधाई। Congratulations, 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 Sister Priya. Congratulations, 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 Sister Priya. सब गा रहे, गुनगुना रहे, बड़ी खुशियों की है आज आई। सबने दुआ सिस्टर प्रिया, सिल्वर जुबली की तुमको बधाई। Congratulations, congratulations, Sister Priya. Congratulations, congratulations, Sister Priya. Congratulations, Sister Priya. Congratulations, Sister Priya. Dedication that have defined her path.
Let us take this opportunity to reflect on her significant contribution and the profound impact she has made in the life of those around her. Punjab, the land of 5 rivers, blessed by the true God and a home to revered gurus and saints, is a place where prayers extend beyond personal well-being to the welfare of the world. In this pious land of Punjab was born Sister Priya Therese, a symbol of divine grace, a living embodiment of the love, compassion, selflessness that knows no boundaries. A firm believer of the universal values that Punjab saints and gurus espoused. It's said that a baby girl is one of the most beautiful miracles in life, one of the greatest joys we can ever know, and one of the reasons there is extra little sunshine, laughter, and happiness in your world today. That extra little sunshine shone in the household of Mr. Prem Masi and Mrs. Amarjit Kaur on 8th of August 1978 in a village Dharamkot Randhawa. Amidst great jubilation and celebration, they welcomed their firstborn, a girl child. The parents and the grandparents were indeed happy to the extent that they distributed sweets in the village and were grateful to the Almighty. Since the family background reflects courage, sacrifice, determination, commitment, toughness, heart, talent, and guts. That's what the daughter Paramjit Kaur inherited from the family, her legacy. जब ये पैदा हुई, किसी को क्या पता था कि इसकी हाथ की लकीरों में क्या लिखा है। किसी ने ना जाना, किसी ने ना पहचाना कि ये नन्ही सी कली कहाँ तक जाएगी। मिस्टर प्रेम को इसका अंदाज़ा भी नहीं था। उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, ओ मेरे पापा मेरा संसार है। Living in a village that was close to the border Pakistan wasn't all that easy. Despite the situation, her enthusiasm did not give away as her passion provided the catalyst for learning to ignite. As an eldest sister, her bonding and closeness with siblings Gulshan, Harpreet, Anju and Kiran was and is beautiful and strong, as they were brought up by their devoted parents, Mr. Prem and Amarjit. All 5 children learned the values of sharing and caring for each other, which no books could teach them. They respected and respect Sister Priya just like their mother. सच में अपने तो अपने होते हैं। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। Sister Priya had the keen desire to grow better, to serve humanity.
Her purpose was, and even now is, to turn mirrors into windows, as she was inspired to join Bethany. From a young age, Sister Priya Teres was drawn to a life of service and devotion. The teachings of love, compassion, selflessness that she inherited from her family resonated within her. Sister Priya's vision, her personal values such as discipline, divinity, prayer, consistency of purpose, the assignment to transmit people has taken her a long way. She expressed her keen desire to serve and join the Bethany, for which she had to wait to complete her 12th as suggested by her parents. Determined and focused on committing herself to the Lord, her family then supported her wholeheartedly. दिल कहता है बच्चा थोड़ा और रुक जाना, दिल कहता है बच्चा थोड़ा और रुक जाना, कुछ दिन तेरे साथ गुजारूं फिर चले जाना, मैं तेरे और लाड लड़ावा फिर चले जाना, दिल कहता है बच्चा थोड़ा और रुक जाना. Sister Priya adapted herself to different climate changes, culture and languages. All this was possible because of her parents and mentors, Sister Jyoti and Sister Nora, and as they are an anchor that holds the ship through the tempest and sets the sails in the favorable direction. Sister Priya joined the Bethany congregation in June 1996 and came to St. Teresa's Convent, Karnal, where she was mothered by Sister Miriam, the then provincial. After 1 month stay in Karnal, she was sent to Kolkata for the formation study called Come and See. There in Kolkata, Sister Nora's guidance and mentoring helped Sister Priya. किसी ने सच ही कहा है, God doesn't call the qualified, He qualifies the called. She was steadfast by the fact that this is my life and this is my calling, no matter what may come. आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है. She never gave up during her stay as a candidate, pre-novice and a novice at Barasat in Kolkata. Those 4 years were the years of formation, the firm foundation of trust, confidence and belief. From her point of view, there was always hope and nothing did she hold on to that. But she never gave up. They say where there is a will, there is a way. It seems she claimed both. The day arrived. It was 5th May 1999 when her dream turned to reality. The day of her first profession at Barasat, and she became a member of Bethany congregation. After her first profession, she was transferred to Maluka, Jharkhand to serve the least and lowest of the society. As Sister was giving her best in Maluka, Sister Nora, the then provincial superior, who knew Sister Priya and her abilities very well, gave her the opportunity to go to Mangalore for higher studies. She scaled new heights of success in her academic career just because of her determination and hard work.
During her studies in St. Agnes College, Mangalore, her professors acclaimed her academic performance and she attained Principal's Roll of Honor from St. Agnes College, Mangalore. During her initial years from 1999 to 2004, she faced many challenges. Sister Jyoti, the then Superior General, who was and is her mentor, understood her cultural background and guided her accordingly. Balancing correction with love and understanding, Sister Jyoti nurtured her with motherly love and care. Sister Priya attained her final profession in April 2005 and was posted at Bathinda in Punjab as a warden and a teacher. From there, she was sent to Nagaland, Dimapur to pursue her B.Ed. In 2007, during her B.Ed, again Sister Priya secured a distinction as a regular student. Wherever and whatever she undertook, she always outshone and stood academically strong. All this was possible for Sister Priya as Sister Jyoti constantly anchored her, and thereafter the vibrant sister was transferred to Stella Maris Convent School, Sultanpur in UP as a teacher, where she worked under the superb guidance of Sister Elodia, a perfectionist in all sense. Though it is not everyone's cup of tea to be warm and easy with people around, but Sister Priya's capacity to connect or get along with people was exhibited through her interpersonal skills. After serving there with full zeal and satisfaction, she was transferred to Don Bosco School in Pithoragarh, Uttarakhand in year 2010. Along with all other responsibilities and community works, she did MA in English Literature from Nainital University. As soon as she completed her MA, there came a higher call in 2012 to be a vice principal at Sacred Heart Convent School, Barnala in Punjab. As a vice principal, she proved her mettle as a disciplinarian and a good social, managerial and administrative skills. The people of Barnala were so happy the way she had a hold on students and school, as she left no stone unturned in her 5 years of service as vice principal in Barnala. Along with being the vice principal, she also held multiple responsibilities like bookstore in charge to managing teaching, discipline and many other activities. Along with all other responsibilities, she appeared for IGNOU entrance test for MEd in 2013. She was 8th topper in the entrance exam. In 2015, she completed her MEd. God was so pleased with her dedication and commitment in 2017 that she was requested by Sister Jyoti, the then Provincial Superior of Northern Province, to be Superior and Principal of Sophia Convent School, Khandwa in MP. Though Sister Priya didn't want to go as her mother was very ill, but she could not say no to Sister Jyoti, who stood by her in all thick and thin. Finally, Sister Priya agreed for both the responsibility as a superior and a principal. On June 5, 2017, Sister Priya reached Khandwa to take up new responsibility. But the very next morning, she got the sudden news of her mother's death. One can imagine what Sister Priya must have gone through that moment. On one side, anxiety of taking new twin responsibilities, and on the other side, the sudden demise of her beloved mother, who was born leader,
from whom Sister Priya inherited all humane values and leadership qualities. Since Sister Priya was the eldest sibling, she shared a special bond with her mother. She was really shattered by the sudden death of her mother. ਰੱਬਾ ਮਾਵਾ ਨਾ ਖੋਵੀਂ ਵੇ ਨਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਕੋਵੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾ ਢੋਵੀਂ ਵੇ ਰੱਬਾ ਮਾਵਾ ਨਾ ਖੋਵੀਂ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਛੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਥੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਮਾ. Sister Erasma, the provincial superior of Northern Province, was the assistant novice mistress of Sister Priya and knew Sister Priya well. She was a pillar and support and strength in guiding, directing and listening. She continued to encourage growing in spirituality and tapping the intellectual capability recognized and encouraged Sister Priya. Sister Erasma was a true mentor and a guru. Her thoughtfulness enabled Sister Priya to grow both spiritually and intellectually. During the lockdown period of 2019 to 2020, Sister Priya reached out to the poor to help them in COVID time. She successfully handled all the responsibilities entrusted on her, from online classes to security and safety of children. All were fulfilled with dedication and commitment. जिंदगी का सफर यही नहीं रुका, सफलताओं का कारवां चलता गया. हर मोड़ पे हमने पाया एक नया रास्ता. उम्मीदों का सितारा हमेशा जलता गया. रुकावटें आई पर हम नहीं झुके. हौसले की उड़ान में हमेशा उठते गए. मंजिलें मिलेगी यकीन था दिल में, ख्वाबों का जहां बसता ही गया. In July 2021, she was posted in St. Teresa's Convent Senior Secondary School, Karnal in Haryana as the principal. In Karnal, Sister Priya ने सबका दिल जीत लिया. VIPs, civil authority parents, teachers, benefactors stand by her for her congenial relationship. As a principal, Sister Priya Terrace is a woman with principles, an epitome of strength. With her diligence, determination and passion, she touched the lives of people of Karnal and proved herself as a perfect leader. A principal who always upheld the principle of saying right things right and wrong deeds wrong, never bending in the face of injustice, and consistently guided and inspired both staff and students to perform to their highest potential. She always set a new benchmark of achievements and success. In June 2024, she was transferred to Sacred Heart Convent School, Ramdas. By now, you have come to know about the remarkable journey of Sister Priya through this short documentary. Let us see in brief about our versatile Sister Priya. Sister Priya, when it comes to the name, perhaps we all do not know how much painstaking she is. Our Priya takes all the great care and thoroughness in the perfection of her work. She has perseverance even in the face of difficulty and continues to work more and more till she gets the final result, which brings only smile at the end on everyone's face. She is so sincere and earnest in making her efforts that come what may. She never stops
even when she is not well. She continues as the show must go on is her one and the only principle. As a leader, Sister Priya is very conscientious person as she understands the right from the core and makes effort to do her duties accordingly. As a role model for her teachers and students, she has all the required values of a real leader who is always one with her people. As a woman of prayer, she starts her day with prayer and ends with prayer. As a perfectionist, she sets a standard for excellence that inspires everyone around. As a grounded, humble and humane person, her heart is full of kindness. She does not discriminate her teachers, students or parents like a mother. People have seen her as a mother and express their love and gratitude. She protects as well as checks them for all the works and from all the sides. पिता मिस्टर प्रेम जी ते माता अमरजीत कौर ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅੰਜੂ ਤੇ ਕਿਰਨ ਭਾਬੀਆਂ ਰੇਨੂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋਜ਼ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੋ। Dear Sister Priya Theres, heartfelt congratulations on your 25th Silver Jubilee celebration. Your unwavering commitment to serve God and society is truly admirable and inspiring. May your faith continue to guide you and may God's grace always be with you as you celebrate this significant milestone. May you celebrate your golden, diamond and platinum jubilees ahead with the same joy, faith and dedication that have marked your incredible journey of service. Dear audience, we end this beautiful documentary with this beautiful song dedicated to Sister Priya. न देखा सुख न देखा चैन, न देखा दिन न देखी रैन, न देखा सुख न देखा चैन, न देखा दिन न देखी रैन, रास्ता मुश्किलों का चुन लिया, ख्वाब ऊंचे थे अंबर से तभी तोड़ा ना था घर से, जीवन सेवा में अर्पण कर दिया। सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, तुमने चुना जीवन नया। सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, तुमने चुना जीवन नया। पिता माता बहन भाई वो रिश्ते छोड़ दिए, सभी रिश्ते सभी बंधन प्रभु से जोड़ लिए। कठिन राहों पे चलना था, दिया बन कर के जलना था, हौसला ये भी प्रभु ने दिया। सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया,
कभी थोड़ी सख्त हो तुम, कभी ममता भरी, भरा दिल में तुम्हारे प्यार हो दिल की खरी। किया तुमने भला सबका, लिया बस नाम उस रब का, और है दिल में तुम्हारे दया। सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, तुमने चुना जीवन नया। सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, तुमने चुना जीवन नया। हो तुम बेटी उत्तरी भारत की, हमें नाज है। सभी हिंदू सभी सिखों की ये आवाज है। तुम्ही परमान हम सबको, बहुत अभिमान हम सबको। तुमने कुछ त्याग ही ऐसा किया। सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, तुमने चुना जीवन नया। सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, सिस्टर प्रिया, तुमने चुना जीवन नया। माँ मरियम ने कृपा करके तुम्हें अपना लिया। प्रभु यीशु ने सेवा का तुम्हें मौका दिया। सभी खुशियाँ तुम्हारी हो, खिली कलियाँ तुम्हारी हो। तुमको ये है हमारी दुआ। सिस्टर प्रिया, Happy Silver Jubilee, Sister Priya, Happy Silver Jubilee, Sister Priya, Happy Silver Jubilee, Sister Priya, Happy Silver Jubilee. Fathers, sisters, friends, Mr. Prem Mercy and the members of his family, I, on behalf of Sister Erasma, the Provincial Superior of Northern Province, Bethany Provincial Aid Karnal, Haryana, the members of our team and the sisters of our province, warmly wish our beloved Sister Priya Therese on our simmering silver jubilee. 25 precious years are gleaming through a vista bright today. God's sweet smile over you beaming, light and shade around you stay. Reaching the mark of 25 years of devotion to God, to the church and to humanity in the Garden of Bethany is not a small event, but a great milestone for Sister Priya Therese. So, she is worthy of congratulations, jubilation, appreciation and celebration. 25 years of dedication, 25 years of inspiration, service to Bethany congregation, congratulations and jubilation. Today is a day of thanksgiving to God for His love, mercy,
kindness, and graciousness to you, dear Sister Priya Teres, of Sacred Hearts of Jesus and Mary, and to us as well. It's a deep feeling of gratitude within each of us who are present here, along with your close-knit beloved family and God-fearing beloved family, the relatives, benefactors, friends, and the parishioners of St. James Church, Durham Court. 25 years of fervent prayers, 25 years of pastoral care, 25 years of sacrifice you have offered every morn. The congregation of the Sisters of the Little Flower of Bethany is proud of you, dear Sister Priya Teres, and grateful to your beloved parents, Mr. Prem and Mrs. late Amarjit Kaur, who offered their first child to God's service. And we are also grateful to your siblings, Mr. Gulshan Masi, Mr. Harpreet Masi, Anju and Kiran, and all your relatives and friends who valued her occasion and willingly said yes to the Lord for the divine call. We are delighted to say that Sister Priya Teres is the first Bethany sister from Punjab to celebrate her silver jubilee of her religious life. Now, let's give a big round of applause for her dedication, commitment, and perseverance till date. 25 years in the Garden of Bethany, busy like Mary and fervent, busy like Martha and fervent like Mary, Sister Priya Teres walked in the footsteps of our founder, blessed her feet with good news to the poor. Reaching this significant milestone reflects your commitment and your unbreakable love, going back along the corridors of 25 years of your religious life. We are happy to ruminate every incident that has given joy and satisfaction in your merited life of adventure and unwavering commitment. Having excelled in your studies with ranks and distinctions, you worked as a dedicated teacher, a vice principal, superior and principal in several places in the north. Being an educator and innovator for a quarter of century, you have shaped the bright minds, fostered innovation, and contributed to the academic tapestry. No doubt, you are a person with great caliber, great planner and diligent implementer. You think ahead of time and make things happen. This is the secret of your effective mission. Sister Priya Teres is blessed with a bundle of gifts and talents. She sees God in all things and all things in God, and enjoys life listening to music, reading, gardening, dancing and drawing. She is a good cook, expert in continental dishes. She has a capacity to adapt to situations beyond her language, culture and customs. We are proud of you, dear Sister Priya Teres. All these and many more qualities make you the joy and crown of Bethany. Let's give her a good hand for what she is today. Today we invite you to join us as we embark on a journey down the memory lane and look forward to the promising future that lies ahead. Jubilees are not just about looking back or looking at the present. They are also about looking to the future, and at a time, 25 years in Lord's service
had been a long journey for you, but with the love of God and unfailing grace from your patroness Saint Therese of Lisieux, you have reached where you are today. When you look at you today, your love, which was unbreakable, unshakable, unconditional and infinite, is an inspiration and attraction to the young girls and boys to answer God's call and work in His vineyard. There were hard times, but you came through, standing firmly as lovers of Jesus do. Each obstacle was a test of your faithfulness, but God sent you His blessings from above. Our sincere wish and ardent desire for you on this auspicious day is that you stay happy for the rest of your religious life, faithful to God in season and out of season, in good times and not so good times, always remembering the promises of God and never giving up hope. Sacred Heart of Jesus, the pearl of great price of your life, and Mother Mary, whom you love dearly, envelop you within the mystery of a total and exclusive love. We pray, as the years roll by, may the silver years have turned into dazzling diamond. This is our sincere wish and fervent prayer for you on this beautiful day, dear Sister Priya Therese. May God send down blessings on Mr. Prem Massey, your beloved father, and his entire family. May you all enjoy 100-fold promised by the Lord of the harvest. Thanks, one and all. Thank you, sister, for your thoughtful reflections and for the steadfast support and guidance you have offered throughout to Sister Priya on her remarkable journey. Your eloquent words remind us of the significant influence you have. Thank you. To further honor Sister Priya's dedicated service, we now welcome Father Thomas Kiprath, the person close to the family and the one who has walked with Sister Priya till date, to share a few words. सत्कारयोग Monsignor Daniel Gill, सत्कारयोग Sister Rose Therese, Provincial Delegate, Rose Margaret, सत्कारयोग Sister Priya Therese, मेरे प्यारे फादर लोग, सिस्टर लोग, पेड़ों, भरावों ते बच्चियों, सारियां नूं जी यसु मसीह दी मनु बहुत वड्डी खुशी अते घमंड है सिस्टर प्रिया दी सिल्वर जुबली मनाउण विच, क्योंकि 7वीं क्लास विच पढ़न वाली गिंदर नाम की एक छोटी सी शर्मीली कुड़ी अज तुहाडे सारियां दे सामने जिन्ने भी एडजेक्टिव्स मदर जी सिस्टर रोस ने बोलिया वो सब अपनाउण दे विच ओ काबिल हुई। इसलिए सब तो पहलो मैं खुदा का धन्यवाद करता हाँ। खुदा ने सिस्टर प्रिया नूं गिंदर नाम की छोटी सी 7वीं क्लास विच मिलन पढ़न वाली कुड़ी नूं अज इन्ना काबिल बनाया। ये खुदा का सब तो वड्डी मेहर। दूजा इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हाँ प्रिया नूं, क्योंकि खुदा दे प्लान के मुताबिक सिस्टर प्रिया। दूसरी गल मैं बधाई देना चाहता हाँ कि उन्होंने मां प्यो का
इन्हां दे मेहनत दे नाल, खुदा दे योजना नाल, खुदा दे प्लान दे नाल ये जिद्दां सहयोग दित्ती, उसे तरह उन्हां दे मां प्यो ने लगातार सवेरे संडे हो मंडे हॉलीडे हो सर्दी या गर्मी सवेरे सब तो पहले खुदा दा नाम लेना, खुदा नूं मत्था टेकना, दुआ करना इन्हां मां प्यो दा एक को अब खूबी है, अजे भी आचार्य। इसलिए मैं सब तो पहला प्रिया तेरेस दा डैडी प्रेम दा सल्यूट करदा, ओदे लई खुदा दे अगे खास दुआ मंगदा, क्योंकि उन्हां दे दुआ दे जरिए अगर सिस्टर प्रिया तेरेस सिस्टर है ओदे दुआ दे जरिए है। इसलिए फिर ओदा पूरा परिवार अमरजीत को बच्चे गुलशन हरप्रीत अंजू किरण सारे इन्हां दे विच हिस्सेदार है। ਜਦੋਂ सिस्टर प्रिया 7वीं क्लास में पढ़ता सी, साढ़े पंजाब विच या साढ़े इस इलाके विच फॉर्मल कैटेकिज्म नहीं सी। पहली बार असी पहले कैटेकिज्म शुरू किया। रामदास पैरिश और धर्मकोट पैरिश एक ही परिवार जैसा थी। सिस्टर एलीमा, स्वर्गीय सिस्टर एग्नेस, बहुत सारे सिस्टर, असी दोवें एक परिवार जैसा। यो भी इतों तक उधर रामदास विच एक ही बाथरूम भी सी सारे फादर और सिस्टर वास्ते भी। इस तरह का गरीब के हाल विच असी तनो मनो एक सी। इसलिए मैं मेरा पहला रिक्रूट पंजाब विच आने के बाद फादर बन के आने के बाद मेरा पहला रिक्रूट है सिस्टर प्रिया तेरेस। वो प्रिया में वो अजय मैनू पता है उसका जो भी सिल्वर है और गोल्डन नजर है डायमंड विच जरूर बदल जाएगा। सिस्टर प्रिया तेरेस पंजाब के एक कोने विच बेहतरीन जमात लई मैं कहूँगा कि एक वड्डा पत्थर या पिलर बन के बेहतरीन जमात ले जरूर खड़ा होएगा। इसलिए मेरी दुआ है, मेरी प्रेयर है बेहतरीन जमात ले तुसी एदा काबिलियत से महसूस करो और अपने कॉन्ग्रेगेशन से बधाई ले अनु वधिया वधिया और कुर्सी ते बिठाउण दे लई भी कोशिश करो, दुआ करो, खुदा ओदे विच भी थोड़ा योगदान पाएगा। इसलिए ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾ The stage is now graced with the presence of Sister Priya's family item, whose hearts overflow with love and gratitude on this momentous day. All the children are on the stage except Abhishek, who is in Canada, and Kiran Masi's children, who are very small. Today we come together to offer not just a performance but a heartfelt tribute that speaks to a depth of pride and affection we hold for her. Dear Sister Masiji, this performance is a small offering of the boundless love we all feel for you. Thank you. Who has selflessly dedicated a significant portion of her life to helping young individuals such as myself find the right path to follow. I greatly appreciate and cherish everything you have taught me. Thank you, Sister Masiji. Sister Purji, you are my second mom. You give me the confidence to face any challenge without fear. A perfect friend. You have all the qualities a mentee
for that. You have groomed me to be a qualified professional, and working with you has been a truly memorable experience. I will remain indebted for your assistance and benevolence. Thank you, Sister Masaji, for your assistance. Sister Preeti, I am so lucky to have you in my life. Your wisdom, kindness, and love have always been a guiding light for me. Sister Poetry, thank you for inspiring, encouraging, and loving me. Sister Poetry, thank you for loving me like a parent and acting like a friend. I am very blessed to be your niece. Thank you, Sister Masiji, for being my inspiration. I feel lucky to have you in my life. Thank you, Sister Masiji, for being my confidant. Love you, Sister Masiji. Sister Poetry, thank you for always showing up and loving me unconditionally.
सब तो पहला मैं बिशप जी का बीजी फादर डेनियल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ ते सारे फादर साहिबान का। टुडे माई हार्ट इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड and I am here to thank my dear Bethany. Thank you, dear sisters, for making Sister Rose Margaret, who has journeyed with me in a very particular way from the time I joined Bethany, and Sister Chantal here, who was the principal when I joined, and she embraced me and she said, God is with you. So I am really grateful to both of you, and Sister Shirley, my friend, my guide, and Sister Pressy, the superior, my friend Prema, all my Bethany sisters, Sister Molly, Father Manojit, my former parish priest from Karnal, along with him, Father Ronnie, who is also a parish priest in another parish. They came all the way from there. So I am grateful to every one of you. Special thanks to Father Matthew Kipreth and Father Neville and my parish priest Father Chirapara for arranging this beautiful program. Last but not the least, I would like to thank my teachers, my students, my family members and my vocation promoter जो आज तक मेरे नाल चलता रहा, Father Thomas Kipreth. So once again, thank you and God bless you all. Thank you, Sister Masiji, for your words of gratitude for all of us present. To bring our celebrations to an energetic close, students from St. Francis Convent School, Dera Baba Nanak, will perform a lively Bhangra. Let's keep the spirit of joy alive and join in as we dance with great enthusiasm. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਗੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। देखो ओके इससे
बनदा जो धरती ते बनदे तारीख हाँ यसू दे उसे नू बनदे वो स्वर्गा दे विच बनदा जो धरती ते बनदे इज्जत में सारी असी यसू नू दिंदे हाँ असी यसू दे बंदे हाँ आजाद बनदे हाँ नफरत दे बनदे बस प्यार ही दिंदे हाँ असी यसू दे बंदे हाँ आजाद बनदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ यसू दे हुंदे आ करिए चिंता कदे हालातां दी मनदे ना असीं रीत कदे दुनिया वी जाता पातां दी यसू दे हुंदे आ करिए चिंता कदे हालातां दी छड़ के कदे ना उतरे छड़ के कदे ना उतरे छड़ के कदे ना उतरे ऐसे रंग च रंगे हाँ असीं यसू दे बंदे हाँ आजाद बनदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार दिंदे हाँ असीं यसू दे बंदे हाँ आजाद बनदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार दिंदे हाँ एक मिनट सामने सामने देखो एक सामने ही सामने हाँ एक मिनट ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਯੂਥ ਸੈਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਾਦਰ ਮੈਥਿਊ ਕੀਪਰਿਜ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇਵਲ ਜੀ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਸਐਨ ਸਿਸਟਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। हसदा नाले वसदा रह तू मेरे हानियां उमरा नाले रुत्ता दोवें बीत जानियां सब्र शुक्र तां बड़ा जरूरी करदा ही रह जो गल्लां दा फिक्र करे हो ठीक जानियां रुत लंगी तो कली दोबारा खिलनी है के नहीं रुत लंगी तो कली दोबारा खिलनी है के नहीं खौरे जिंदगी फिर दोबारा मिलनी है के नहीं खौरे जिंदगी फिर दोबारा मिलनी है के नहीं। प्यारा नालों
चल जिंदीए चल ओ कर चलिए जेड़े करने मामा मामा जुग जुग रहन जिउंदियां सब दी खैर मनावा मां दा चेता आउंदा ए तां उसे पल जी करदा छोटे हुंदियां लगदा सी जिउं भज सीने लग जावां भज सीने लग जावां भज सीने लग जावां भज सीने लग जावां छाला रहन राजी हुण जेड़ी जेड़ी थां ते इक इक बोली अज सारियां दे नां ते राजी हुण जेड़ी जेड़ी थां ते इक इक बोली अज सारियां दे नां ते बारी बारी बरसी कटण गया सी बारी बारी बरसी कटण गया सी खट के लियांदी मदनी ओ दुनिया लक वसदी किते मौज ना पंजाब जई लभणी ओ दुनिया लक वसदी किते मौज ना पंजाब जई लभणी ओ दुनिया लक वसदी रुत लंगी तो कली दोबारा खिलनी है कि नहीं रुत लंगी तो कली दोबारा खिलनी है कि नहीं खौरे जिंदगी फिर दोबारा मिलनी है कि नहीं खौरे जिंदगी फिर दोबारा मिलनी है कि नहीं सदा ना बैना रल के जो पानी अज पतना लंघ गया ओने फेर नहीं आना पल के
शुरू हुंदे ने पिंडां दी रूह विच वसदे जिन्ना कद उच्चा हुंदा उदों भी उच्चा हसदे गल्लां ही गीत रकाने महफिल सद लैने आ जद मर्जी देख लिया के हसदे ही रहने आ जद मर्जी देख लिया के हसदे ही रहने आ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਆਊਗਾ ਤੂੜੀ ਦਿਆਂ ਕੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਟਿਕਾਣਾ ਮੂਰੇ ਹੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰੱਬ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਸੋਹਾਂ ਜਦ ਚੱਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਕਲੀ ਹਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁੜੇ ਆਮਦ ਨੂੰ ਗੱਲੀ ਲਾ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲ ਪੈਨੇ ਆ ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ जो अपनी थां ते कल्ले रब ने औ फरिश्ते हुंदे आ सब तो वध के करदे जेड़ा खून दे रिश्ते हुंदे आ सब तो वध के करदे जेड़ा खून दे रिश्ते हुंदे आ रखो परिवार सांभ के लाइफ दा निचोड़ हुंदा जे बेबे बापू हुण सिर ते फिर हौसला ही होर हुंदा जे बेबे बापू होण सिर ते उदों हौसला ही होर हुंदा एक मूंह दी तंद जेड़ी हथों कदे खुसदी नी बापू चाहे रुस जावे मां कदे रुसदी नी धीरे दी भी झड़क नूं दिल ते नी लाईदा ऐली जिड्डा आसराया हुंदा वड्डे भाई दा कोई बापू जिन्ना नरम नहीं उतों उतों ही कठोर हुंदा जे बेबे बापू हुण सिर ते फिर हौसला ही होर हुंदा जे बेबे बापू होण सिर ते उदों हौसला ही होर हुंदा जगदी है जगदी जगदी है जगदी बापू तेरी पग वेख ले बापू तेरी पग वेख ले तेरे पुत दे भी होनी सोहनी लगदी ओ बापू तेरी पग वेख ले तेरे पुत दे भी होनी सोहनी लगदी ओ बापू तेरी पग वेख ले तेरे पुत दे भी होनी सोहनी लगदी केड़ा दिल तो करदा इत्थे दुनिया चंदरी खोटी आ
ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਨਾ ਕੀਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਰੋਟੀਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਪੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਬਸ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਰੀਸ ਕੌਣ ਕਰੂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਹੋਣ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਹੋਣ ਸਿਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੀਸਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੀਸਾਂ ਨੇ, ਜੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨੇ। ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਬ ਜਦੋਂ ਚੱਕਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਬ ਜਦੋਂ ਚੱਕਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਅਣਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਧੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਆਖਦੀ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸੋਂ ਕੋਈ ਪਰੀ ਆਈ ਜਾਪਦੀ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸੋਂ ਕੋਈ ਪਰੀ ਆਈ ਜਾਪਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਧੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕਾ